हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अतुल गिरी फ्रॉम द चैनल वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 8th में इस बार जो भी सिलेबस आपका कट हुआ है ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशंस ऑफ कोविड-19, इसमें जितना भी सिलेबस आपका कम हुआ है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, साथ ही साथ में आपका CBSE ने भी कम किया है। तो सारे चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स या फिर कौन कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम हुआ इस बार। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको पूरा एंड तक देखना। क्लास 8 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ने हैं इस बार आपको इस सिलेबस में। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि ये जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो भी सिलेबस कट हुआ है, द 30% सिलेबस विच हैव बिन कट, ये सिर्फ और सिर्फ 2020 या 2021 का जो आपका सेशन है, मीन्स ये वाला जो सेशन है, इस सेशन में खाली कट होगा। तो 30% आपका सिलेबस यहाँ पर कट हुआ है, वो चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इन मैथमेटिक्स क्लास 8, talking about unit 1 to 6, in unit 1 that is rational number, exercise 1.2 is not in the syllabus. Okay, so the questions of expression of rational numbers on number line and finding rational numbers between two rational numbers, this will not come in the syllabus. Talking about unit 2, here we will not see exercise 2.4 in the syllabus. Means the questions based on the applications will not come in the question papers. In unit 3 there is no change, in unit 4 there is no change, and in unit 5, that is data handling, we will exempt exercise 5.3. Exercise 5.3 will not come in your syllabus. In unit 6, basically in the exercise 6.1, there are the questions based on the pattern based questions, that is question number 4, 5 and 6. These will not come in your syllabus right now. And in exercise 6.2, the questions based on Pythagoras triplets, means the question number 2nd, it will also not come in your syllabus right now. So friends, when we talk about the unit number 7, there will no change, means no syllabus cut here. In exercise 8, unit 8, there will be one exercise that is based on compound interest, means exercise 8.3. It will not come in your syllabus in 2021. In unit 9, there will be no change. In unit 10, the 3D questions, the questions based on the 3D, means up and front view, this will not come in your syllabus. Means if we talk about this exercise 10.1, the whole exercise will be exempted here. In the same unit 10, the exercise 10.2, the questions based on mapping. Mapping means what is in your nearest places. These questions will also not come in your syllabus. In unit 11, there is no change. In unit 12, exercise 12.2, means the standard forms, means question number 1 and 3. These questions will not come in your syllabus. Now when we talk about the mathematics 8 class unit number 13, there will be no change. In unit 14, exercise 14.4, exercise 14.4 will not come in your syllabus. In unit number 15, there is no change, and in 16, the questions based on missing places, means exercise 16.1, this will exempted from your syllabus. These are the total syllabus of mathematics. Rest all the units and rest all the exercises will come in your syllabus. So friends, we talk about the social science subject of class 8. Here in the book number 1, that is resources and development, here chapter number 3, that is minerals and power resources, and chapter number 6, that is the human resources. These two chapters are exempted from your syllabus, so these
two chapters will not come in your syllabus in 2021. When we talk about the second book, that is the Social and Political Life Part 3. In this book, we don't have 3 chapters right now. The chapter number 4, that is Understanding Laws. The chapter number 6, that is our criminal justice system, and chapter number 10, means law and social justice. These 3 chapters are exempted from your syllabus. These 3 chapters will not come in your syllabus in 2021. And when we talk about our third book, that is our pasts, here also we don't have 3 chapters. The chapter number 1, where, how and when. The chapter number 4, that is tribals, decos and vision of golden age. And the chapter number 6, that is about weavers, iron smelters and factory owners. These 3 chapters will also not come in your syllabus in the social science class 8. So now we talk about the English. In English there are 2 books. The one is Honeydew and second is It So Happened. First of all, we talk about the Honeydew. Here the chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's. Bipin Chaudhary's chapter will not come in the syllabus. The chapter number 9, Great Stone Face. Great Stone Face. It will also not come in your syllabus. The first part and the second part also. The first part was chapter number 9 and second part was the chapter number 10. These 2 will not come in your syllabus. So there are 2 poems also. The first one is Geography Lessons and it will also not come in your syllabus. That is the poem number 2. It will not come in your syllabus. And the third poem, that is Macavity, the Mystery Cat. It will also not come in your syllabus in 2021. So in English class 8, Honeydew chapter, there are 3 main chapters, that is chapter number 4, Bipin Chaudhary, chapter number 9 and 10, The Great Stone Face, part 1 and part 2, and the 2 poems, chapter number 2 and 3, Geography and Macavity, the Mystery Cat. These will not come in your syllabus in 2021. And when we talk about the book It So Happened. So when we talk about the book It So Happened, here are the 3 chapters which will not come in your syllabus. The chapter number 6, The Fight. The Fight will not be in your syllabus in this year. The 8th chapter, that is Jalebis, it is also exempted from the syllabus right now. And the chapter number 9 and 10, there are basically 4, 9 and 10. The 9th chapter is The Comet. The Comet part 1 and part 2. Both these chapters will not come in your syllabus. So it so happened there are 4 chapters which will not in your syllabus. The chapter number 6, that is The Fight. The chapter number 8, Jalebis. The chapter number 9, The Comet part 1 and chapter number 10, The Comet part 2. So in English there are these are the chapters which are not in your syllabus in 2021. Now we talk about Hindi. दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी में क्लास 8 में बसंत पार्ट 3 में से 5 चैप्टर गायब किए गए हैं. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 12, 17 और 18. यानी जो चैप्टर नंबर 8 है ये सबसे कठिन समय नहीं, वो वाला चैप्टर आपका गायब हो चुका है. चैप्टर नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो ये भी आपका चैप्टर नहीं है इस बार आपके सिलेबस में. सुदामा चरित्र चैप्टर नंबर 12 जो है ये भी आपका सिलेबस में नहीं है इस बार. चैप्टर नंबर 17 जो है आपका बाज और सांप, ये भी आपका गायब है. चैप्टर नंबर 18 यानी कि जो टोपी वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर भी आपका इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है. और ये सारा का सारा चेंजेस आपका सिर्फ और सिर्फ 2020 और 2021 वाले सिलेबस में हुआ है. में से साल जो आपके एग्ज़ाम होंगे खाली उसके लिए है ये. फ्रेंड्स यहाँ आपके भारत की खोज में आपके 4 चैप्टर यहाँ पर भी नहीं है. लेसन नंबर 6 जो कि है अंतिम दौर का पार्ट 1 और अंतिम दौर का पार्ट 2, ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं. इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 8 है तनाव चैप्टर भी आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है. और 2 पृष्ठभूमियाँ हैं आपकी भारत और अंग्रेजी यानी चैप्टर नंबर 9, ये भी आपका सिलेबस में से गायब कर दिया गया है. यानी इस साल जो आपके बसंत में से 5 चैप्टर आपके गायब हैं और भारत की खोज में से आपके 4 चैप्टर यहाँ से आपके गायब हैं. चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9. So friends, when we talk about your science subject, in the class 8 there will be 5 chapters which are exempted in this syllabus.
The chapter number 3, that is the synthetic fiber and plastic. It will not come in your syllabus. The chapter number 5, coal and petroleum, it is also exempted from your syllabus. The chapter number 10, that is the reaching the age of adolescence, it will also not come in your syllabus. It is a chapter of your biology. The chapter number 15, that is some natural phenomena, ये भी आपका syllabus में नहीं है. And the chapter number 18, pollution of air and water, this chapter is also exempted from your syllabus. So in science there are 5 chapters which are not coming in your syllabus in 2021. These are the chapters number 3, the synthetic fibers, the chapter number 5, coal and petroleum, chapter number 10, reaching the age of adolescence, the chapter number 15, some natural phenomena, and chapter number 18, pollution of air and water. तो दोस्तों ये थी वो सारे का सारा आपका सिलेबस जो कि आपका इस बार कट हुआ है क्लास 8 के अंदर में. हमने आपके सामने डिस्कस किया है मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस सब्जेक्ट. इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप अपने कंसर्न स्कूल में आप पता कर सकते हैं कि आपके उस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट किए गए हैं. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आपके कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है इसके बाद भी कि कोई ऐसा डाउट है जो आपका छूट गया है या कोई ऐसा चैप्टर जो शायद मुझसे मिस हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे. और कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है. तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.